जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत छे तमारू एक नवा ज विडियो में। तो आवी गया सभी तमारा माटे एक नवो ज विडियो लईने। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो अने तमे पण इच्छता होय माता लक्ष्मीना आशीर्वाद तमारा उपर पण बन्या रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लखवानुं भूलशो नहीं। अने हाँ, मारी चेनल पर नवा होव तो मारी चेनल श्रेष्ठ वातों ने सब्सक्राइब करजो। अने हवे विडियोनी शरूआत करिए जरा पण मोडुं कर्या विना। भले तमे मरी जाव तो पण पूजा घर में न राखो आ 5 वस्तुओं। जो तमे पण पूजा घर में राखो छो तो दुनियानी कोई शक्ति तमने गरीब बनवाथी नहीं रोकी शके। जी हाँ मित्रों, आजे आ विडियो द्वारा अमे तमने जणाववा जई रह्या छीए के पूजा घर में कई कई वस्तुओं राखवाथी धननो नाश थाय छे अने देवी लक्ष्मी आवा घरनो त्याग करे छे। आ साथे ज आ विडियो में अमे ते 4 खास वस्तुओं विषे जाणीशुं जेने पूजा घर में राखवाथी तमने धनवान बनवाथी कोई रोकी शकशे नहीं। हाँ मित्रों, जो तमे घर में सुख, समृद्धि अने धननी इच्छा राखो छो तो घर में होवुं खूब ज जरूरी छे आ 4 वस्तुओनी पूजा। आ हुं नथी कही रह्यो, कृष्णए पोते आ विषे कह्युं छे। तेथी संपूर्ण माहिती माटे मित्रों, दरेक व्यक्ति तेना घर में एक नानु पूजा घर अथवा मंदिर चौक्कसपणे बनावे छे, जेनी अंदर ते पोताना तमाम देवी देवताओं अने तेमनी साथे जोड़ायेली महत्वनी वस्तुओने आदरपूर्वक राखे छे। परंतु शुं तमे जाणो छो, शास्त्रमा मंदिरनी अंदर केटलीक वस्तुओं राखवा जेटली अमुक वस्तुओं राखवी जेटली वधु फलदायी छे तेटली वधु शुभ अने ते वस्तुओं अशुभ छे जे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे छे अने ते पूजाना शुभ प्रभावने पण घटाडे छे। आनी सीधी असर परिवारना सभ्यों पर पड़े छे, जेनाथी तेमनी प्रगतिमां अवरोध आवे छे अने परिवारना सभ्यों वच्चेनो परस्पर प्रेम ओछो थवा लागे छे। तो आजे आपणे जाणीशुं के लोको जाणता जाणे पोताना घरना मंदिरमां शुं राखे छे। मित्रों, जो तमे पण तमारा मंदिरमां आवी वस्तुओं राखी छे तेने तरत ज पूजा रूममांथी हटावीने बीजी कोई जग्याए राखो, परंतु तेने क्यारे पूजा रूममां न राखो। परंतु ते पहेला जो तमे पण इच्छो छो के लक्ष्मी मातानी कृपा तमारा पर बनी रहे तो आ विडियो ने लाइक करो अने चैनल ने सब्सक्राइब करो अने कॉमेंट बॉक्स में चौक्कसथी जय लक्ष्मी माता लखो। मित्रों, चालो पहला जाणीए के पूजा रूम में कई वस्तुओं न राखवी जोईए। 1. निर्माल्य। पूजा रूम में निर्माल्य एकठा न थवा देवुं जोईए। निर्माल्य में अगरबत्तीओ, वरक, वासी फूलों, हार अथवा पूजा संबंधित अन्य कोई नकामी सामग्रीना खाली पेकेट होय छे। तेमने तरत ज पूजा खंडमांथी दूर करवू जोईए। आ वस्तुओना कारणे घर में पड़े छे नकारात्मक असर ऊर्जा रहे छे अने गरीबीने पण आमंत्रित करे छे। 2. जो तमारा पूजा रूम में भगवानना कपड़ा फाटी गया होय अथवा पूजाना वासणो फाटी गया होय तो तेने पण तरत ज काढी नाखवा जोईए। आ वस्तुओं पूजा में ध्यान केंद्रित करवामां अवरोध बनी जाय छे अने गरीबी तरफ दौरी जाय छे। आ नकारात्मक बाबतोथी प्रार्थनानुं कोई सकारात्मक परिणाम नथी मळतुं। आ वस्तुओने अशुभ मानवामां आवे छे, तेने पूजा खंडमांथी एक पछी एक दूर करवी जोईए अने नवी वस्तुओ लाववी जोईए, जेथी जीवनमां समृद्धि मळे अने पूजानुं फळ पण मळे। 3. तूटेली मूर्ति। पूजा खंड में तूटेली मूर्ति के चित्र राखवामां आवे तो तेने तरत ज हटावी दो, ते शुभ मानवामां आवतुं नथी, जेना कारणे घरमां नकारात्मक ऊर्जानो वास रहे छे। 4. पूर्वजोनी तस्वीरो। जो तमे पूजा रूम में तमारा पूर्वजों के वडवाओनी तस्वीरो राखी होय तो तेने तरत ज हटावी दो। वास्तुशास्त्र अने ज्योतिषमां मृत स्वजनोना फोटा राखवाने अशुभ मानवामां आवे छे। आ खराब परिणामों तरफ दौरी जाय छे। मित्रों, चालो जाणीए पूजा खंड में कई वस्तुओं राखवी खूब ज जरूरी छे। 1. शंख। भगवान विष्णु अने माता लक्ष्मी ने शंख खूब ज प्रिय छे। आवी स्थिति में पूजा स्थान पर शंख होवो जोईए।
ભગવાનની પૂજા દરમિયાન નિયમિત રીતે શંખની પૂજા કરવી જોઈએ અને ફૂંકવું જોઈએ. શંખ ફૂંકવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા આવે છે અને ઘરમાં દેવી લક્ષ્મીનો વાસ રહે છે. 2. ગંગા જળ. હિન્દુ ધર્મમાં અગ્નિ અને ગંગા જળનું વિશેષ મહત્વ છે. જીવનની દરેક વિધિમાં ગંગા જળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગંગાનું પાણી ક્યારેય બગડતું નથી. તેથી પૂજા સ્થાન પર ગંગા જળ હોવું જોઈએ. પૂજા દરમિયાન દરરોજ ગંગા જળનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો. પૂજા રૂમમાં ગંગા જળ હોય તો માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય છે. 3. શાલિગ્રામ. ભગવાન શાલિગ્રામને પણ પૂજા રૂમમાં રાખવા જોઈએ અને તેમને દરરોજ તુલસી મિશ્રિત પાણીથી સ્નાન કરાવવું જોઈએ. આમ કરવાથી તમને ભગવાન વિષ્ણુના તમામ અવતારોની કૃપા પ્રાપ્ત થશે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર જે પણ ઘરમાં દરરોજ શાલિગ્રામની પૂજા કરવામાં આવે છે તે ઘરમાં ક્યારેય દરિદ્રતા આવતી નથી અને દેવી લક્ષ્મીની કૃપા હંમેશા બની રહે છે. 4. સ્વસ્તિક. ઘરના મંદિરમાં સ્વસ્તિક અવશ્ય હોવું જોઈએ. તે જરૂરી છે કારણ કે તમારા ઘરમાં સ્વસ્તિકને સુખ, સમૃદ્ધિ, સૌભાગ્ય અને શુભનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ જ મુખ્ય કારણ છે કે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરતા પહેલા સ્વસ્તિક ચિહ્ન અવશ્ય બને છે. તમે તેને રોલીથી પણ બનાવી શકો છો. આ માહિતી જનહિતને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવી રહી છે. તમારી આસ્થા અને આસ્થા પર જ્યોતિષ અને ધર્મના ઉપાયો અને સલાહ અજમાવો. વિડિયો હેતુ ફક્ત તમને વધુ સારી સલાહ આપવાનો છે. અમે આ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારના દાવા કરતા નથી. મિત્રો, જો તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને નવા હોય તો મારી ચેનલ શ્રેષ્ઠ વાતોને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ.